Jai Hind aspirants, I hope you all are doing well. So today we are going to discuss the daily current affairs for the date 10th of October 2023. And you know that this date is extremely special. Why? Because today is the World Mental Health Day. Okay, and the theme for the Mental Health Day for this year is mental health as a universal human right. And yeah, it is absolutely correct because this theme is going to align it with the sustainable development goal. And there is a connection between mental health and decent work according to ILO, that is International Labor Organization. So it says that approximately 15% ऑफ द टोटल वर्किंग एज जो 15% की हमारी जो टोटल वर्किंग एज है ग्लोबली पूरे वैश्विक स्तर पर उसको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से या मेंटल हेल्थ का इशू होने की वजह से काफी सारी चीजें हो सकती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन, अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीजें you can use it in your essays, you can use it in your GS papers and in multiple things. So चलिए इसकी बात हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि अगर इंडिया के इनफॉर्मल वर्कफोर्स की बात करें, देखिए किसी भी कंट्री के दो तरह के वर्कफोर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। इनफॉर्मल क्या हो गए? जैसे कि आपके ठेले लगाने वाले, जैसे आपके रेहड़ी वाले, ठीक है, दोज हु आर नॉट गेटिंग एनी फॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम। सो अगर आप बात करें भारत की, तो हमारे देश की जो वर्कफोर्स उसका 90% जो है वो इनफॉर्मल वर्क पॉपुलेशन में आता है। तो इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, अनसेफ कंडीशन, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग। जैसे आपने सुना ही होगा कि 8 घंटे सबको काम करना चाहिए, उससे ज्यादा अगर कोई करता है, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट द बॉडी एंड द माइंड। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शंस, इंश्योरेंस नहीं होता, हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, इंफ्रा नहीं होता, बेसिक नेसेसिटी रोटी कपड़ा मकान नहीं होता, जेंडर डिस्पैरिटीज आर देयर एंड प्रिकेरियस employment. These are the challenges of India's informal workforce due to mental health. So the challenges which basically they face, it is basically the points which I have told you previously. So youth and unemployment, if you talk about, so in India there are a high rate of unemployment is there amongst the youth. क्या होता है, most of the youth जैसे आप सब भी हैं, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, you are preparing for different different things, so you are not formally employed at any place. Many are forced into informal work leading to the poorer mental health. कई बार घर की conditions की वजह से, कई बार different different factors की वजह से people are forced to do informal work, and that leads to a pathetic mental health. So right now, like we are having a need in our country for employment quality to enhance that social security for the youth. If you talk about social security and mental health, दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है. They both coexist with each other. So if you talk about the informal worker, they face the mental distress due to debt, उधारी की वजह से, और हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से। इंश्योरेंस नहीं होगा तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगा, और हेल्थ केयर कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, घर में आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा, इंसान नशे का आदी हो जाएगा, ठीक है, और हेल्थ पे भी, और मतलब मानसिक हेल्थ पे ज्यादातर उसका प्रभाव पड़ेगा। Interconnectedness of economic and mental health factors. If you are mentally fit, okay, like it keeps, we keep on saying that if you are mentally stable, if you are mentally fine, if you are mentally healthy, you will be able to enhance your economic conditions. So mental health and economic health are correlated. And if you talk about after COVID-19, the cases of mental health has been increased. If you talk about like right now, डेली वेज ओनर्स के जो सुसाइड रेट्स हैं वो काफी बढ़े हैं। अगर आप बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, इसकी जो रिपोर्ट है, इट केम इन 2021, अभी रिसेंटली आई थी। सो इट इज सेइंग दैट 26% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स हु डाइड एट दैट टाइम दे वर डेली वेज अर्नर, जो रोज का मतलब लाइक कारोबार करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग थे।
तो इस पे हमें फोकस करना है कि हाउ वी कैन इंश्योर सोशल सिक्योरिटी so that the mental health can be improved. And if you talk about types of social security, तो ये तीन तरह की होती है: प्रमोशनल, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव. ठीक है, जस्ट मेक श्योर प्रिवेंशन जो होती है इट इज एम्ड एट ऑगमेंटिंग इनकम. प्रिवेंटिंग, इफ यू टॉक अबाउट, इट इज इंटेंडेड टू forestall the economic distress, and if you talk about the protective, it is designed to ensure relief from the external shock whatsoever it comes. So मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बजटरी एलोकेशन वी कैन इंक्रीज द कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड ह्यूमन राइट ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोएक्टिव पॉलिसीज. Okay, mental health as a fundamental right, we can include emphasis on providing quality mental health care for everyone, alignment with the sustainable development goal number three, that is good health and well-being. And there is like importance in the sustainable development goals number eight, that is decent work and economic growth for all. So ये सारे pointers आप use कर सकते हैं, and this topic is extremely important for your GS paper 2 and for your essay. All right. So let's move ahead to the women reservation bill. अभी recently आपने सुना होगा, काफी सारी इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि women reservation bill लाया गया है. काफी लोग इसको चुनावी एजेंडा बोल रहे थे, काफी लोग इसको कह रहे थे कि ये क्रांतिकारी स्टेप है, काफी लोग इसमें कह रहे थे कि ओबीसी वुमेन्स के बारे में कुछ बात नहीं करी गई. तो काफी सारी बातें हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट वुमेन रिजर्वेशन की जो बात है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये आज की बात नहीं है. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की डिबेट्स के टाइम की बातें हैं. ठीक है, ये तब से इस बात पे चल रही है. बट अगर आप बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसके पीछे काफी सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. व्हाट आर द हर्डल्स इन द पाथ? सो इफ यू टॉक अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन बिल, सो कोई भी आपको रिजर्वेशन जो मिलता है दैट इज टाइड टू द सेंसस एंड डिलिमिटेशन कमीशन. सो डिलिमिटेशन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल for basically increasing or decreasing the seats of the houses of the parliament on the basis of population. So अभी कोविड के चलते हमारा सेंसस प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो दैट इज अ बिग हर्डल. एंड द लैक ऑफ टाइमलाइन, सो वी डोंट हैव अ क्लियर टाइमलाइन. पार्लियामेंट में बस ये बोल दिया गया, बट वी आर नॉट हैविंग एनी टाइमलाइन टू इम्प्लीमेंट दिस बिल, which is one of the big hurdle for making this thing into for converting this thing into reality. Further delays, if you talk about, so the pandemic induced a delay in the census, as I told you previously, which impacts the women reservation bill and delimitation commission. Okay, the delimitation conflicts are there. So these two are the hurdles right now in this particular bill. So if you talk about the challenges, okay, so like right now, the bill which has been presented, it is not like the 2008 version. So if you talk about right now, like, and if you talk about the bill which was like introduced in 2008, so what's the change? Right now, the bill which has been introduced, it does not include the provisions for the intrastate women representation. And there, the current bill, if you talk about, it says that the reserved seat for women should be rotated after every delimitation exercise. इससे क्या होगा? It means that the seats set aside for women may change the constituency boundaries periodically. जो 2008 वाला जो बिल था उसमें ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं. ठीक है, सो ये डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन की जो बातें हैं और ये जो सेंसस है उसका ना होना, ये एक हर्डल है. ये बात आप याद रखिएगा. ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है? राइट नाउ हमें ऐसा है कि फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन कराना है. सेंसस और डिलिमिटेशन की चीजों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराना है, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट स्विफ्टली रिजॉल्व हो. एंड पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन कॉर्पोरेट्स को, इवन हम सबको ये देखना है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हमारे आसपास की जगहों में हर जगह पे प्रॉपर हो, अच्छे से हो. और दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वंस अगेन फॉर योर जीएस पेपर 2 एंड योर एसे. मूविंग अहेड टू पीएलएफएस. अब ये क्या बला है? पीएलएफएस इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ठीक है, सो ये क्या है, किस काम का है? पहले क्या है कि पहले आपको पता होगा कि एक एनएसएसओ होता है. ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस.
ठीक है, तो एनएसएसओ पहले क्या कराता था? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। उसको नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय द पीएलएफएस। तो पीएलएफएस ने रिसेंटली शो किया है, जो उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022-23 की, इट शोज डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया, so which is a good news for India's labor market, and it is a positive step towards the economic stability and job creation जो हम काफी समय से ढूंढ रहे थे। So now let me give you some facts. What is PLFS? It is conducted by the MOSPI. What is MOSPI? Ministry of Statistics and Program Implementation, which is under the Government of India. It replaced the employment unemployment surveys by NSSO. Its frequency, it should be conducted periodically, typically within an year. First round was conducted in 2017-18, marking the survey's initiation. If we talk about data categories, तो इसमें ये categories है: employment status, unemployment rate, sector wise employment, सारे primary, secondary, tertiary, quaternary, income, demographics, and few more things. If we talk about the methodology, so the sample survey approach the data collected from the households and individuals through scientific sampling process. And policy implementation, if we talk about, so it informs the government policies related to employment, related to labor market interventions, and economic planning to the common people. And what are the key terms which were included in this? तो जो key terms है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप एक बार देख लीजिएगा. You can take a screenshot of it. LPFR, that is labor force participation rate, worker population ratio, unemployment rate, activity status, usual status. Usual status में period 365 days का होता है, और एक्टिविटी स्टेटस दैट इज करंट वीकली स्टेटस, तो इसमें बाय डिफॉल्ट नाम ही में जब वीकली है, सो दैट मीन्स 7 days का ये रिपोर्ट देता है आपको. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एसए एंड इवन फॉर द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि पीएलएफएस क्या है, कौन कंडक्ट कराता है, और कैसे ये इंडक्ट कराता है. Moving ahead to the next news, which is Claudia Golden wins the 2023 Nobel Prize for Economics. अब क्लाउडिया गोल्डन ने ऐसा क्या कर दिया? So she is a researcher in Harvard University. She is an economist and a professor also in the Harvard University. So what she did, okay, so basically she worked upon gender inequality. Okay, so she has been given the Nobel Prize for her work in women's labor market outcomes. So she addressed the vital questions like gender inequality at work, the impact of economic growth, the role of education, marriage, and childbirth. एंड बेसिकली इनके जो मतलब लाइक रिसर्च है उसमें एक बहुत ही हाईलाइटिंग पॉइंट है, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड द शिफ्टिंग नेचर ऑफ द जेंडर पे गैप. सो पहले क्या होता था? पहले वुमेन वर सपोज टू लाइक, पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा होता था काफी सारी सोसाइटीज में कि वुमेन का ये समझा जाता था कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ they are not able to do anything. They are just indulged into like making sure that the child is having a good life. बच्चे को पालने में ही उनका पूरा जीवन निकल जाता था. But her research shows that how contraceptive pills came as a revolution to the women, and now things are changing. So our insights regarding it, it is extended to the policy implementation, offering the valuable guidance in promoting the gender equality. As simple as that. And once again, this particular topic is important for your GS paper 3 and your essay. So now moving ahead to this thing, this is like अभी तक आपने देखा होगा सारी चीजें जो मैं बता रहा था, क्योंकि आज की न्यूज जो है प्रीलिम्स वर्दी ज्यादा नहीं थी. एक ये थी प्रीलिम्स वर्दी, दैट इज श्रीलंका टू चेयर आईओआरए. ये आईओआरए क्या बला है? दैट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन. तो श्रीलंका ने किसको सक्सीड किया? श्रीलंका ने बांग्लादेश को सक्सीड किया है. एंड इफ यू टॉक अबाउट आईओआरए, आईओआरए क्या चीज है? आईओआरए 1997 में बना था. ठीक है, आईओआरए में 23 मेंबर स्टेट्स हैं, और मेजर कंट्रीज की अगर आप बात करें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. सारी कंट्रीज अभी बताऊंगा मैं अगली स्लाइड में, डोंट वरी अबाउट इट. सो इट्स रोल इज इम्पॉर्टेंट इन द एंटायर इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन जिन कंट्रीज को टच करता है वो सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन ओशन, उसका एक वाइटल रोल है ग्लोबल ट्रेड में.
फिर कंटेनर शिप्स काफी मात्रा में यहाँ चलती है, बल्क कार्गो एंड ऑयल शिपमेंट्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट IORA का जो एजेंडा है, that focuses upon crucial areas like trade, maritime security, fisheries management, disaster risk, blue economy, and strengthening the regional ties. अभी क्या है कि श्रीलंका आपको पता है हाल फिलहाल में इट वाज फेसिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट वाज फेसिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो श्रीलंका को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की चेयर देना, it is going to like enhance its relation with its neighboring countries like India, China, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Nepal, and Afghanistan. So if you talk about the IORA, it includes the country like Australia, Bangladesh, Comoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, UAE, and Yemen. So here you can see this particular portion is the Indian Ocean, and Indian Ocean के around जो countries हैं वही इसकी member है. So these are the 23 countries which are the members of IORA. सो IORA का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन where the headquarters of IORA is situated. That is extremely important for your prelims. So now students, let's solve some questions which were the previous year's questions. So the first question says, which of the following statement is correct regarding the general difference between the plant cell and animal cells? This question came in 2020 prelims. So plant cells have a cellulose wall whilst animal cells do not. Plant cells do not have plasma membrane unlike the animal cells which do. Mature plant cell have one large vacuole whilst an animal cell has many small vacuoles. So pause the video, try to attempt it. एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज सी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. Moving ahead to the next question, which also came in 2020 prelims in context to the recent advancement in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for fertilization of egg in vitro by the donor sperm, genetic modification of the sperm producing cells, development of stem cells into functional embryos, prevention of the mitochondrial disease in offspring. So pause the video, try to attempt it. And yes, you are absolutely correct. The correct answer for this is D. So that's all from my side. That's all for today's current affairs. In case you have any doubts, any queries, any questions, you can DM me on Twitter over this account at the red Kutta Bhauka. And at the end, as usual, I just want to say that study hard, practice hard, and have a wonderful day, students. Stay healthy, stay awesome, because you all are awesome. So see you soon in the next class of current affairs. Bye bye. Take care.